देखिए कल आप लोगों को मैंने सिखाया है कि how can you do the esterification MCQs or questions. So you can see this question number 2 is saying the structure of an ester is shown. You can see this. It has this linkage. It means K is ester, right? What is the name of this ester? It's quite simple. I told you that भाई पहले वाले ये जो 3 कार्बन है पहले इनको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे. This propyl methanoate. Propyl 3 कार्बन है तो propyl and this is methanoate. ठीक है ना? तो इसका नाम क्या होगा भाई आपके पास propyl methanoate. So the right answer should be D. Then an ester is produced by reacting together the carboxylic acid. This is, you can see this methanoic acid, and the alcohol. This is propanol. What is the name of the structure of this ester? Same. This is again propyl methanoate. This is again propyl methanoate. इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है. और स्ट्रक्चर कौन सा होगा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक कार्बन है, तो दिस शुड बी द राइट स्ट्रक्चर. ठीक है ना? ये 3 कार्बन अल्कोहल में और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो दिस शुड बी द राइट आंसर. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then here we have they are saying which compound has a pH less than 7 in aqueous solution. So pH less than 7 acids की होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स सारे क्या होते हैं आपके पास? एसिड्स होते हैं. ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है. देखें C डबल बॉन्ड O अगर बीच में आ रहा है तो एस्टर है. C डबल बॉन्ड O बीच में आ रहा है तो एस्टर है. C डबल बॉन्ड O और O अगर बीच में आ रहा है तो ये एस्टर है. ठीक है ना? तो ये देखें C डबल बॉन्ड O OH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड. So the right answer should be C. C should be the right answer. ठीक है ना? इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 की आप बात करें, so which alcohol and acid will react together to make this ester? It's quite simple, very simple. You can see this. ये बॉन्ड बना है, इसी को तोड़ दो, 2 कार्बन इथेनॉइक एसिड हो गया, 2 कार्बन इथेनॉल हो गया. तो it should be ethanoic acid and ethanol. So where it is, you can see this. Answer is C. 2 carbon वाला alcohol, 2 carbon वाला carboxylic acid. Then in you can see this over here in question number 7, an organic compound X has a molecular formula C4H8O2. देखें ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है, ये एस्टर का भी हो सकता है, एंड टर्न्स डैम ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि ये एसिडिक है. ये डैम ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या है? आपके पास एसिड है. सेम फंक्शनल ग्रुप वाला सवाल है और कुछ भी नहीं है. ये है आपके पास एस्टर, ये है आपके पास एस्टर, ये है आपके पास एस्टर. But if you focus over here, तो ये है C double bond O OH. तो this is carboxylic acid. तो यही ये काम कर सकता है, which turns blue litmus paper into red. The right answer would be D. Right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलें, तो here we have question number 8, question number 11 and question number 12. पहले आप ये तीनों questions करेंगे, फिर मैं आपको इसकी explanation दूंगा. चल. So here we have question number 8. What the question number 8 is saying, after which conversion does the product contain more carbon atoms than the reactants? More carbon atoms than the reactants. And it's quite simple. इथेनॉल 2 कार्बन होते हैं, इथेनॉइक एसिड 2 कार्बन होते हैं. इथेनॉल 2 कार्बन होते हैं, बट इथाइल इथेनोएट 2 इथाइल के अंदर 2 इथेनोएट के अंदर, तो यहाँ 2 कार्बन है बट यहाँ 4 है. और अगर आप इसको देखें तो एथीन टू इथेन 2 कार्बन, एथीन टू इथेनॉल 2 कार्बन. सारी कन्वर्जन में 2 to 2 है सिवाय बी के. The right answer should be B, क्योंकि इथेनॉल में 2 कार्बन होंगे लेकिन इथाइल इथेनोएट जो है आपके पास 4 कार्बन वाला एस्टर होगा. Is that right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then question number 11 अगर आप देखें, so the diagram shows the structure of an ester. You can see this. What is the name of this ester? The name of this ester. You can see this. We have 3 carbons in alcohol, so it is propyl. It is propyl, and we have 4 carbons in carboxylic acid, so it is butanoate. So what should be the name of this structure? It is propyl butanoate. The right answer would be C. Right, bacho? Yes, sir. Then how many moles of ethanoic acid reacts with 1 mole of magnesium? So if you write this equation, so it would be like this. We know that magnesium ka charge is 2 plus, so definitely it requires 2 moles of CH3 to react completely to form hydrogen gas and salt. So it should be B. Right, बच्चों? Yes, sir. Okay. Then here we have question number 13, which we already done in alcohols. Then question number 14, ethanol with 2 carbons was reacting with a propanoic acid with 3 carbons in the presence of concentrated sulfuric acid. Which statement about the organic product of the reaction is correct? So
you need to keep remember 5 carbon वाला ester बनेगा तो it should be C5H10O2 the general formula of esters 5 carbon वाला बनेगा ester तो general formula ये follow हो रहा है तो it should be the right answer. A should be the right answer. B नहीं हो सकता है 3 ऑक्सीजन नहीं आएंगे it is formed by addition reaction नहीं है esterification है. It is propyl ethanoate. Propyl ethanoate नहीं हो सकता ये ethyl propanoate है. ये ethyl propanoate है. So the right answer would be A. Right बच्चों? Yes बच्चों, is that right? Yes, sir. Yes, sir. Question number 15 is saying which statement about the ethanoic acid is correct. Ethanoic acid can be made by the catalyzed addition of steam to ethene. इससे अल्कोहल बनता है. Propanoic acid can react with ethanoic acid produce ester. ऐसा नहीं होता, दोनों एसिड आपस में नहीं मिल सकते हैं. The solution 1 mole per deciliter cube of ethanoic acid and 1 mole per deciliter cube of hydrochloric acid react with magnesium at equal rates. No. Ethanoic acid is weak acid and hydrochloric acid is strong acid, so the rate of reaction would be different for both of them. And the formula of ethanoic acid is CH3COOH. This is the right answer. Yes, bacho? Yes, sir. Then here we have question number 16, which we have already have been done. 17 done. 18. Which property of a liquid ester can be used to check its purity before use as a food flavoring agent? अच्छा देखिए बच्चों, आगे आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें स्मेल लगा देंगे क्योंकि स्मेल इज वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ esters. They are fruity smell, or you can say that they are just very smart और बड़ी sharp सी इनकी खूबसूरत सी जो है ना ये स्मेल होती है और जो है आप लोग ये समझ के इसको यहाँ टिक लगा सकते हैं. But you all know that smell is not the property to find out the purity of the substances. If you want to find out the purity of the substances, so it should be boiling point or the melting point. For solids, it should be melting point. If a solid is going to be melted at the sharp temperature, then it would be pure. And if the liquids are going to be boiled at sharp temperature, then it would be pure, right? So the right answer would be A. Boiling point is the key to check the purity of the liquids, right? Yes, sir. Then two esters have the same molecular formula C3H6O2. What are the names of these two esters? C3 यानी कि 3 कार्बन से ज्यादा ना हो, या तो इथेनॉल होगा या तो इथेनॉइक एसिड होगा या इथेनॉल होगा या तो इथेनॉइक एसिड होगा. 3 कार्बन से ज्यादा ना हो, so it should be methyl ethanoate और ethyl methanoate. 1 and 3 इन दोनों के अंदर 3 कार्बन होंगे और ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे. राइट बच्चों? Yes, sir. Then question number 20. Yes, here we have 20. The diagram shows the structure of an organic acid. Which row is correct? So name of the acid reacts with aqueous sodium carbonate to produce carbon dioxide or not. We have 3 carbons, so definitely it is propanoic acid. So answer it can be C or D. And react with aqueous sodium carbonate to produce carbon dioxide. Definitely they react with carbonate to produce carbon dioxide. And this is also the test for carboxylic acid as well. Okay, so the right answer is T. Next, here we have question number 24 and 25, जो कि आपने करना है. जल्दी से करिए और मुझे let's start. So if we talk about MCQ number 24, a compound has a molecular formula C4H8O2. अब ये जो molecular formula follow कर रहा है ये ester भी हो सकता है और ये carboxylic acid भी हो सकता है. It reacts with calcium carbonate to give carbon dioxide. एक confirm हो गया कि ये भाई ये carbon dioxide produce कर रहा है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, तो ये एसिड है. तो ये क्या हो सकता है? ये 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. तो इट मींस इट शुड बी ब्यूटेनोइक एसिड. सो वेयर आर द 4 कार्बन्स? वेयर आर द 4 कार्बन्स? देयर आर COOH. यू नीड टू फाइंड आउट COOH. COO बीच में कहीं आ रहा है, इट मींस ये CO2 अगर बीच में कहीं आ रहा है तो उसका मतलब एस्टर है, और अगर आखिरी में आ रहा है विद H देन इट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये हो गया इसका राइट आंसर डी. ठीक है भाई. तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में which of the following has not been prepared by the reaction of carboxylic acid and alcohol? Which of the following has not देखना बहुत जरूरी है. अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एस्टर बनेगा, डेफिनेटली आपके पास एस्टर बनेगा, डेफिनेटली आपके पास एस्टर बनेगा. लेकिन यहाँ पर एस्टर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इट शुड बी सी. ये नहीं बन सकता. ठीक है. Then in the next one,
26. A compound has the following structure. You can see this. It has double bond. It has carboxylic acid. So they are saying which reaction will occur with this compound? Bromine water dechlorize. That's right, because the carbon-carbon double bond is there. It will react with an alcohol to form ester. That's absolutely right. Carboxylic acid is there. Then here we have, it will react with sodium metal as well. Exactly. It's carboxylic acid over there. So it will react with sodium as well. So all three are the right answers. Right. Then when ethanol reacts with ethanoic acid, the ester ethyl ethanoate is produced. What is the formula of the ester form when the methanol reacts with butanoic acid? Methanol with butanoic acid. So it would be methyl butanoate. Methyl butanoate और methyl यानी कि आपके फंक्शनल ग्रुप के बाद जो एक कार्बन आएंगे वो एक होगा खाली. So ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बाद एक कार्बन आना चाहिए खाली. So this should be D. D should be the right answer. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Then which statement would be true of the compound which has the formula shown? इसका एक कुछ ये carboxylic acid है, दोनों तरफ carboxylic acid है. They are saying it would react with excess aqueous sodium hydroxide in 1:1 ratio. No, it should be 1:2 ratio because एक हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा एक हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर दूसरा वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा दूसरे वाले हाइड्रोक्साइड के साथ. The ratio should be 1:2. Right, so this is not true. Then in aqueous solutions, it would have a pH of 9.5. No, this is a carboxylic acid, so it's have the acidic pH. It would react with alcohol to form esters. Third one is the right statement. Right, बच्चों? Yes, Right, sir. everyone? Then here we have question number 29. Four compounds are shown. Which pair of compounds have the same empirical formula? Okay. Empirical formula किसका same होगा? आप check कर लें. 4 carbons and 2, 4, 5, 8 hydrogens and 2 oxygens. इसका empirical formula should be C2H4O. Then here we have C3H6O, and it is the same empirical formula. This will be C2H4O, and this will be C2H4O2. So it should be CH2O. So the empirical formula जो कि same है वो है first and 3 का. Right बच्चों? Yes, sir. Then question number 31, the solubility of the carboxylic acid in water decreases. वो खुद बता रहा है आपको. Solubility of carboxylic acid in water decreases as the size of the carboxylic acid molecule increases. यानी कि number of carbon बढ़ेंगे तो solubility decrease होगी. Which carboxylic acid is the least soluble? जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे. जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन वो सबसे कम soluble. So which one is the least soluble in water? It should be butanoic acid. Right बच्चों? खुद ही बता दिया उसने सब कुछ, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी. Right? Yes, sir. चलें, तो here we have one more question over here. Esters are formed when an alcohol reacts with a carboxylic acid. Which ester would be formed using the carboxylic acid and alcohol shown? So, this should be something good. देखें, ये carboxylic acid का OH जाएगा और इसका आपके पास से H जाएगा. So, यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, so यहाँ पर अटैच होगा आपके पास क्या? यहाँ से अगर हम रिमूव करें तो ये अटैच होगा आपके पास O, C, C और इस C के ऊपर है CH3. So it should be something like that. इस तरह का कुछ एस्टर बनना चाहिए आपके पास ना. तो ये कहाँ है? देख लेते हैं. 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड. देखें इसमें 4 कार्बन नहीं है. 1, 2, 3, 4. इसमें 5 कार्बन. देखें 1, 2, 3, 4, 5. इसमें 4 कार्बन है तो ये तो नहीं हो सकता. फिर 1, 2, 3, 4. इसमें भी 4 है. ये भी नहीं हो सकता. इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन तो हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके बिल्कुल बराबर में ब्रांच लगी हुई है. यहाँ देखें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके बराबर में नहीं, उसके बराबर के बाद ब्रांच लगी हुई है. तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता. तो द राइट आंसर शुड बी दिस. राइट बच्चों? Yes, sir. तो ये बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा मुश्किल भी लग रहा है मुझे और शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा. चलें, अब ये वाले सवाल हैं आपके पास 33, 34, 35, 36. 4 MCQs हैं. चलें, ये जल्दी से आप लोगों ने करने हैं.
Okay, so if you talk about MCQ number 33, just look at over there, the MCQ. The MCQ is saying that in the manufacture of ethanoic acid, the chemical industry uses the following sequence of reactions, right? Compound X is converting into ethene, then ethene is converting into ethanol, and then ethanol is converting into ethanoic acid. They're asking what are the three steps. We know that ethene can be produced by hydrocarbons by cracking, right? So the right answer can be A or B. ये नहीं हो सकते हैं. Then ethene जब बन जाती है तो we add water over there और हम उसको convert करते हैं ethanol में. Then this is actually hydration और फिर आपके पास ethanol oxidize होकर ethanoic acid बनाता है. So A should be the right answer. Right. Then an organic compound has an empirical formula C2H4O. What could be the compound? What could the compound be? Ethanoic acid, butanol, ethanoic acid, and ethanol. Again, this is not ethanol. अगर ये ethanol होता तो C2H6O होना चाहिए था. This is also not ethanoic acid. अगर ये ethanoic acid होता तो ये C2H4O2 होना चाहिए था. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते. तो 4 कार्बन वाला होगा तो you need to multiply it with 2. तो ये बनेगा C4H8O2 और दो ऑक्सीजन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं. So the right answer should be A. Then which pair of compounds are both esters and isomers of each other? Okay, so you can see this. इसके अंदर COOH आ रहा है लेकिन इसमें COO आ रहा है यानी एस्टर है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एस्टर नहीं है दोनों. और इसमें CO2 आ रहा है, इसमें COOH आ रहा है यानी दोनों एस्टर नहीं है. इसमें CO2 आ रहा है, इसमें CO2 आ रहा है, इसमें CO2 आ रहा है, इसमें CO2 आ रहा है यानी C और D में आपके पास क्या आ रहे हैं? दोनों एस्टर्स आ रहे हैं. तो इसमें देख लें 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सी शुड बी द राइट आंसर. ठीक है. इसमें अगर आप देखें तो 4 और 1 5 और यहाँ है 2 और 2 4 तो ये आइसोमर्स नहीं है. ठीक है बच्चों. Then the diagram shows the structure of an ester. What are the starting material for the making this compound? यानी कि वो आपसे पूछ रहा है इसके reactants. 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन वाला अल्कोहल. तो ये हो गया आपके पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है और 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ब्यूटानोइक एसिड. द राइट आंसर शुड बी सी. राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? राइट बच्चों, क्लियर? Yes. Then here we have question number 38. What are the reactions of compound W, X, Y, and Z? What are the reactions? Okay, so dechlorize bromine. ब्रोमीन को डीक्लराइज कौन कर सकता है? ब्रोमीन को डीक्लराइज कर सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हेयर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हेयर. तो W and Z, these two should be the right answer, right? तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं. Then has a pH less than 7. इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है and नहीं, ये भी मौजूद है हमारे पास. तो we have 3. So W, X and Y. So this should be the right answer and react with a carboxylic acid to form ester. तो ये भी react कर सकता है और ये भी react कर सकता है X और Z. So this should be the right answer. C. A covalent compound P has the empirical formula CH2O. Then which structure represent P? CH2O. CH2O. Then CH2O ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना. और CH2O ये भी नहीं हो सकता. So let's see, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो C2H4O2. So C2H4O2, this should be the right answer. ठीक है बच्चों, is that right? Yes. So आखिरी रह गया 43. हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व. तो अगर आप 43 को देखते हो, what should be the answer of 43? Which compound could be flavoring in an alcoholic fruit drinks? So it should be ester, और ester के लिए C double bond COO का बीच में आना जरूरी है. तो ये बीच में आ रहा है C double O. So this should be the right answer. ठीक है बच्चों, is that clear?